गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अपने स्टेट के लिए स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये जो कोड है इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ऐसे जो सेकुलर लॉज हैं उनके प्रोविजंस जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली बोरो किए गए हैं। तो अगर हम हाईलाइट्स देखें तो ये सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए लॉ वैलिड होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें एलजीबीटी इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड किया गया है और इसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी जो है वो कवर नहीं किया गया है ताकि उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस को सेफ गार्ड रखा जा सके। लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए कहा गया है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा 1 महीने के अंदर। नहीं कराओगे तो 10,000 तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकती है और ऑफ कोर्स उसको जो है टर्मिनेशन भी की जा सकती है उस लिव इन रिलेशनशिप की। जो चिल्ड्रन वेडलॉक में से बॉर्न होते हैं तो उस कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया है, मतलब इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कंसेप्ट अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गार्डियनशिप की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब फादर को लीगल गार्डियन माना जाएगा अभी भी और मदर को सिर्फ एक कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड ही माना जा रहा है। इस लॉ में चेंजेस नहीं किए गए हैं इस पर्टिकुलर प्रोविजन से। अब अगर हम इनहेरिटेंस के बारे में देखें तो को पार्सनरी प्रॉपर्टी सिस्टम जो हिंदू लॉ में होता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो एक यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस स्कीम लाई जा रही है सबके लिए जो कि सेम होगी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली इनहेरिटेंस प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा रहा है ताकि डिस्प्यूट्स को कम किया जा सके। तो इसमें जो है ओमिशंस हम यही देख सकते हैं कि एलजीबीटी इंडिविजुअल्स को जो है वो ओवरलुक किया गया है। मैट्रिमोनियल लॉज जो थे जिसमें कि कॉन्जुगल राइट्स होते हैं जो उनको रेस्टिट्यूट करना, मतलब मैरिज जो है वो इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन पर के लेवल पर पहुंच चुकी है, फिर भी कोर्ट ऑर्डर की वजह से जो है हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना पड़ रहा है, दोनों जबकि नहीं रहना चाहते हैं। उन प्रोविजंस को भी, मतलब कोर्ट ऑर्डर के जो है इन प्रोविजंस को भी जो है वो अभी तक रखा गया है, जो कि एक रिग्रेसिव स्टेप है। इवॉल्विंग सोसाइटी में अगर हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहते हैं तो उनको डाइवोर्स दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर जो है वो उनको दोबारा से मैरिज चलाने को कह रहा है, जो कि एक रिग्रेसिव स्टेप है, तो उसको अभी भी उन प्रोविजंस को रिटेन रखा गया है। बाकी क्रिमिनलाइजेशन की गई है ऑफेंसेस की, चाहे वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स हों और चाइल्ड मैरिज हो, अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डिसॉल्विंग मैरिज हो, जो फोर्स्ड री मैरिज हो, उन सब प्रोविजंस को जो है वो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट कमिंग्स भी यही हैं इसकी। एलजीबीटी का एक्सक्लूड किया गया है। आउटडेटेड प्रैक्टिसेस जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो कि जैसी आउटडेटेड प्रैक्टिस है उसको भी रिटेन रखा गया है। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है तो आपको जो है मैरिज में, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है वो बिल्कुल चाहे एक दूसरे से बात भी ना करते हो जो तो भी जो है उसको ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स जो है उसको नहीं माना जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डिवीजन के से रिलेटेड जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी है वो ऑफ कोर्स कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर उसको अभी भी रखा गया है। तो मतलब उसके ऊपर कोर्ट से रिलेटेड जो है वो ऑर्डर्स ही वैलिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशन जो ये बिल है इसको पास कर दिया है जिसके अंदर कि 10 साल तक की जेल का प्रोविज़न है और 1 करोड़ तक के फ़ाइन का प्रोविज़न है अगर कोई इरेगुलरिटी दिखती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो बैकग्राउंड क्या है इस केस का, तो इस बिल का तो ऑफ कोर्स लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने पिछले 7-8 साल में जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं, पब्लिक एग्ज़ाम्स दिए हैं और 70 केसेस देखे गए हैं। आई एम सॉरी, 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं पेपर लीक्स की वजह से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो लगभग 70 केसेस ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक्स देखे गए हैं इसी सेम पीरियड में। कोई सब्सटेंसिव लॉ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था जो इसको डील कर सके, तो इसलिए ये लॉ लाना ज़रूरी हो गया था। तो इसमें जो है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि हाँ उनके फेयर एफर्ट्स को रिवॉर्ड भी किया जाएगा और उनका फ्यूचर सेफ है। तो ये बिल जो है सेंट्रल रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ही जो है वैलिड होगा, स्टेट अपने बिल ला सकेंगी।
तो ये जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ही वैलिड होगा। स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए ऑफ कोर्स ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपकी स्टेट उसके लिए कोई बिल लाती है या नहीं लाती है। तो ये स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स की जो चीटिंग है अगर होती है तो ऑफ कोर्स उसको जो जो एग्ज़ाम की कंडीशंस होती हैं उसी के बेसिस पर जो है वो पनिश किया जाएगा। लेकिन ये किसको डील कर रहा है? जो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स बन चुके हैं पेपर लीक कराने के लिए उनको डील कर रहा है, ठीक है, जिनको ये सज़ा दी जा रही है। अनफेयर मीन्स भी डिफाइन किया गया है प्रॉपरली। 20 ऑफेंसेस को अनफेयर मीन्स माना गया है और सभी ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल रखा गया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी या फिर एसीपी लेवल तक मिनिमम जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल एजेंसी को भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन सौंप सकती है। एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी भी बनाने को कहा गया है कि कैसे कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशंस को प्रोसेस को ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। ये बिल बेसिकली स्टेट्स के लिए भी एक ड्राफ्ट बिल की तरह काम करेगा और अगर स्टेट्स चाहें तो इस बिल को अपने स्टेट में भी लागू कर सकती हैं स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। तो वाटर का जो लॉ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वो प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन को जो है वो रेगुलेट करता है ऑफ कोर्स। और इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस और रेगुलेशंस थे जो कि क्रिमिनलाइज कर रहे थे, इवन जेल टर्म्स दे रहे थे बहुत सी माइनर ऑफेंसेस के लिए भी, जैसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम और वेल। अब उसको जो है जेल टर्म को हटाकर एक फ़ाइन लाया गया है बस। इम्प्रिजनमेंट के जो माइनर वायलेशंस के लिए भी इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस थे उसमें, उसको कम करके जो है वो अब फाइन्स से रिप्लेस किया जा रहा है ताकि ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रमोट की जा सके। तो मेजर फीचर्स ऑफ द बिल भी यही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स को जो एग्जाम्प्ट कर सकती हैं न्यू डिस्चार्जेस ऑफ वाटर से रिलेटेड। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो नॉमिनेशन होगी चेयरमैन की, उसके मैनर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी जितनी भी इकट्ठी होगी जो ये ऑफेंसेस से, माइनर ऑफेंसेस की डिक्रिमिनलाइजेशन करने से, वो सब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के अंदर जो है वो डाली जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं ICIMOD के, उन्होंने हिंदू कुश हिमालयन रीजन को एक बायोस्फीयर, ऐसा रीजन ऑफ बायोस्फीयर कहा है जो कि लगभग कोलैप्स के ही जो है वो ब्रिंक पर पहुंच चुका है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एक इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज और लर्निंग सेंटर है जिसको 1983 में बनाया गया था ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू कुश हिमालयस। तो ये नॉलेज शेयरिंग और जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है वो क्रिटिकल माउंटेन प्रॉब्लम से रिलेटेड फाइंड करने में हेल्प करता है। और इसके मेंबर कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है। साइंस को पॉलिसीज़ के साथ ब्रिज करने का ये एक इंस्टीट्यूशन है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अब हिंदू कुश हिमालय क्या है? ये 3500 किलोमीटर तक एक्सटेंड होते हैं, 8 कंट्रीज से पास होते हैं, अफगानिस्तान से पास होते हुए म्यांमार तक पहुंचते हैं। सोर्स ऑफ 10 लार्ज एशियन रिवर सिस्टम्स हैं ऑफ कोर्स ये, और ये वाटर, इकोसिस्टम सर्विसेज, लाइवलीहुड्स देते हैं इस रीजन के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने जो है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के बारे में लोकसभा में बताया है। तो ये एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन कंपाइल करना चाहता है लाइफ, हिस्ट्री और इथोस ऑफ इंडियन विलेजेस के बारे में। तो इसमें जो डेटा इकट्ठा होगा वो 7 ब्रॉड कैटेगरीज का डेटा है। आर्ट्स और क्राफ्ट्स के बारे में, इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेजेस, स्कॉलेस्टिक विलेज लिंक्ड विद टेक्सचुअल और स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशंस, एपिक विलेजेस, हिस्टोरिकल विलेजेस, आर्किटेक्चरल हेरिटेज विलेज, इन सब कैटेगरीज में ब्रॉडली डिफाइन किया जाएगा विलेजेस को। तो कल्चरली लगभग हम 6.5 लाख विलेजेस को मैप करेंगे कंट्री के, ताकि इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को एनकरेज और अप्रिशिएट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा के टेस जो सैटेलाइट है उसका डेटा यूज़ करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक हैबिटेबल जोन प्लैनेट को जो है वो
आइडेंटिफाई किया है। तो ये टेस है क्या, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये प्लैनेट्स को सर्च कर रहा है नासा का मिशन, और ये अर्थ के स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार्स को जो ऑर्बिट करते हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है ऑफ कोर्स। तो ये सैटेलाइट एक फॉलोअप है नासा के हाईली सक्सेसफुल केपलर स्पेस टेलीस्कोप का। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था 2020 तक के लिए, लेकिन उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करके 2020 से एक्सटेंड कर दिया गया ऑफ कोर्स। टेस्ट जो है सर्कल को, अर्थ को सर्कल करता है यूनिक अर्थ ऑर्बिट के आस में 12 से 15 दिन में। ये इस तरह से इंक्लाइन किया गया है कि इसकी जो है इसको जो है कोई भी ब्राइट प्लैनेट या फिर मून जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए, तो इसको जो है लाइट से जो है इसका ऑब्स्ट्रक्शन ना मिले और ये ठीक से ऑब्जर्व कर सके वास्ट स्काई को। 4 सेंसिटिव कैमरास जो हैं सिस्टमेटिकली लगभग 2 लाख से ज़्यादा नियरेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार्स को ये स्कैन करते रहते हैं। 75% ऑफ द स्काई को जो है इमेज कर चुका है ये ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ट्रांजिट मेथड का यूज़ करता है प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में। मतलब पीरियोडिक डिप्स जो दिखते हैं स्टार की ब्राइटनेस में या प्लैनेट्स में, उनको जो है ऑब्जर्व करता है और उसके बेसिस पर ये मैपिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की एक टीम जो है उन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स के साथ जो है मिलकर एक न्यू मॉडल डेवलप किया है इंटरनल थर्मल एवोल्यूशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस का। तो कोरोनल मास इजेक्शंस क्या है, लार्ज एक्सपल्शंस ऑफ प्लाज्मा या मैग्नेटिक फील्ड जो सन के एटमॉस्फेयर जिसको हम कोरोना कहते हैं उससे निकलते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हैवियर आयंस, मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर्स की तरह होते हैं ये भी, लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग। तो यूजुअली जो है ये सन स्पॉट ग्रुप्स के पास से निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं ऑफ कोर्स, और ये आउटवर्ड निकलते हैं सन से मतलब दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लैनेट पर पहुँचते हैं 15 से 18 घंटे के बीच में, और ये बढ़ते रहते हैं साइज़ में भी। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है हमारे प्लैनेट पर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डिसरप्शन हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, फिर पावर ग्रिड भी जो है वो कई बार कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, स्पेक्टेकुलर जो आपको नदर्न और सदर्न लाइट्स देखने को मिलती है, जिनको हम ऑरोरास भी कहते हैं, वो भी जो है इन्हीं की वजह से जो है वो हमको ऑब्जर्व होती है अर्थ पर। ठीक है, रेडिएशन हैज़र्ड्स भी कर देता है एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे स्पेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइट्स में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अभ्यास। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली 4 फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के। तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट बेसिकली काइंड ऑफ अ मिसाइल सिस्टम है जो कि ड्रोन की तरह जो है वो जाता है, जिसमें कि ऑब्जर्व करने के लिए कैमराज होते हैं। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो को जो है वो ऑफर करता है ये अभ्यास, और ताकि वेपन सिस्टम्स जो है वो ऑब्जर्व कर सके थ्रेट सिनारियो को और उसके बेसिस पर जो है वो अटैक कर सके। तो ये ऑटोनोमस फ्लाइंग के लिए डिज़ाइन है ऑफ कोर्स, और ऑटो पायलट के हेल्प के साथ इसको जो है वो ड्राइव किया जाता है। और डीआरडीओ तो आपको पता ही है, आर&डी विंग है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इंडिया के लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नगोया प्रोटोकॉल। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैमरून जो है रिसेंटली उन्होंने नगोया प्रोटोकॉल को जो है वो ज्वाइन किया है, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग जिसमें हो रहा है। तो नगोया प्रोटोकॉल क्या है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज देता है ऑफ कोर्स, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स इंश्योर करता है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको 2010 में जापान में अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर ही। और जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी जो है बेनिफिट्स निकलते हैं उसकी इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग जो है करने के लिए ये नगोया प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। तो ये रिसर्चर्स को जेनेटिक रिसोर्सेज से जो कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में हेल्पफुल हो गए, डेवलपमेंट में, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब में इक्वली शेयर करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाकर देता है नगोया प्रोटोकॉल। और ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको भी, जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को भी जो है वो कवर करता है, ताकि उससे रिलेटेड बेनिफिट्स भी जो हैं उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो आपको पता ही है कि जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, उसी का ही एक तरह से रिज़ल्ट है। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज़ करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो है, जो कि आपके नगोया प्रोटोकॉल के फॉर्म में आया है, उन सब से ही जो है मेजरली रिलेटेड है ये।
ठीक है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं वो इसकी हाईएस्ट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो आपको पता है हर साल होती है। मॉन्ट्रियल में, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है या फिर सेक्रेटरीट है। ओके, तो इसमें दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो कार्टेजाना प्रोटोकॉल और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। तो कार्टेजाना प्रोटोकॉल जो है वो जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है ताकि कोई उसका मिस यूज़ ना कर सके। नगोया प्रोटोकॉल आपको पता ही चल गया है कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो होते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज से, उसको रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाकर देता है। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Uniform Civil Code of Uttarakhand. This topic is important for your social issues. So government of Uttarakhand has brought a uniform civil code which would impact family laws within the state, and this has been brought into the state assembly yesterday by the government. So this law has been significantly borrowing the secular laws, like the provisions from secular laws like the Special Marriage Act and the Indian Succession Act. So the let us see the key highlights of this proposed bill. So this law would be only applicable to heterosexual relationships. So that would mean, which means that it would exclude most of the LGBT individuals. It does not even extend to the scheduled tribes because we want to respect the customary practices which have been safeguarded for them under the constitution. This law has provision for mandatory registration of live-in relationships within 1 month of the commencement of that relationship. Okay, the failure to do so would invite punishment up to 3 months in jail or fine not exceeding to 10,000 rupees. So it also abolishes the illegitimate status of children who are born out of wedlock. So it is a progressive step, but still it fails to address the guardianship discrimination which is faced by mothers, which says that only fathers are the legal guardians of the child, whereas mothers are just custodians of the child. Okay, so it also proposes a unified inheritance by doing away with the co-parentage system of Hindu law. So instead of that, this law would establish a uniform inheritance scheme for all, regardless of the religion. And the key omissions are exclusion of the LGBT individuals, of course. Okay, and then there is also provision that it retains the outdated restitution of conjugal rights, and it also lacks provisions for irretrievable breakdown of marriage, which means that sometimes when the couple both are not willing to live with each other, still the court order sometimes asks them to live together, and in the false assumption that the marriage would be fine once they start living together, even the irretrievable breakdown of marriage is not accepted and the divorce is not granted. Okay, so this is a regressive step, and it has to be dealt as soon as possible in our laws. So it also criminalizes many offenses, like for example the live-in relationships one. The it also criminalizes child marriages. It also punishes unconventional methods of dissolving the marriage. It also criminalizes forced marriages, which is of course a progressive step. So these are the shortcomings also. LGBT have been excluded. Outdated practices like restitution of conjugal rights have been retained. The irretrievable breakdown of marriage has as ground for uh, divorce has been excluded. There is with respect to matrimonial property, court discretion has been of course uh, retained, so there is lack of clarity which would lead to more uncertainty and disputes with respect to this particular issue. Okay, so the next topic is Public Examinations Prevention and Unfair Means Bill of 2024. This topic is important for your governance section. So Lok Sabha has passed this bill, which mandates a maximum jail term of 10 years and a fine of up to 1 crore for malpractices and irregularities in competitive examinations. So of course this bill would uh, be applicable only in central examinations, because
This is being brought by the central government. So, as per various reports, more than 1.45 crore students have been affected by paper leaks from 2016 to 2023. More than 70 cases of question paper leaks have been occurred in this same period. Currently, there is no specific law to deal with this unfair means adopted by or offences committed by various entities involved in this conduct of public examinations. So that's why there is a need to bring such a bill to bring transparency, fairness, and credibility of public examinations. So, of course, this bill would not target the students. Any cheating case would be dealt by the administrative or guidelines of that particular examination itself with respect to students. But it is dealing with the organized groups which have been formed for paper leak. So, for them, the punishments have been defined. So it also defines what unfair means. What does the term unfair means is. It also uh, this bill also has made all offences as cognizable, non-bailable, and non-compoundable. The bill also proposes that officers not under the rank of DSP or ACP should be investigating those matters of paper leaks, and central government also holds the power to send the probe to a central agency. It also proposes to form a high level National Technical Committee on Public Examinations, which would make recommendations to make the computerized examination process more secure. Okay. So this would also serve as a model draft for other states. So as I've mentioned earlier, this bill would only be applicable to the central examinations like UPSC, SSC, RRB examination, IBPS, etc. So it would not be applicable on the state exams, because for that the respective states have to make their own laws. So this law would of course serve as a model draft for the states to copy. Okay. So the next topic is Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill of 2024. This topic is important for your environment section. So Rajya Sabha has recently passed this Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill of 2024, and this law was enacted in 1974 to provide for prevention and control of water pollution. But the bill has indicated that there were certain outdated rules and regulations which need to be um, um, addressed, because otherwise they were creating trust deficit. For example, under the 1974 Act, imprisonment provisions are there for up to 3 months for abstraction of water from a stream or well without informing the state board. So the bill is now amending this provision to just a fine of between 10,000 rupees to 15 lakh rupees. So many imprisonment provisions were there for minor violations, which were against the spirit of ease of living and ease of doing business. So they are now being replaced with fines. And the bill also says that the manner of nomination to the chairman of state pollution control board, the central government would prescribe that criteria. Central government may also exempt certain categories of industrial plants from the application of section 25, which relates to restriction on new outlets and new discharges. So central government may also issue guidelines on the matters relating to grant, refusal, or cancellation of consent by any state board for establishment of any industry. So it also decriminalizes minor offenses, and the amount of penalties which would be realized through these offenses would be credited to the Environment Protection Fund. So the next topic is International Center for Integrated Mountain Development. This topic is important for your international relations and environment topic. So experts from the International Center for Integrated Mountain Development have declared that Hindu Kush Himalaya region is a biosphere which is on the brink of collapse. So what is ICIMOD? So it's an intergovernmental knowledge and learning center which is working on the behalf of people of Hindu Kush Himalayas. It was formally established and inaugurated in 1983. The mission is to build and share knowledge, which drives regional policy. So member countries include Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal, and Pakistan. Board of Governors is the highest governing body of this center. The aim of this body is to serve as the serve this region through information and knowledge generation, and find innovative solutions to critical mountain problems. Its headquarters is located in Kathmandu, that is in Nepal. So what is Hindu Kush Mountains?
or Hindu Kush Himalayas. So they extend 3,500 kilometer over all or part of 8 countries from Afghanistan to Myanmar. It is the source of 10 large Asian river systems. So it provides water, ecosystem services, and on the basis of livelihood to people in this region. Okay. So the next topic is Mera Gaon Meri Dharohar program. This topic is important for your uh, governance topic. So recently, Union Minister of Culture has informed the Lok Sabha about the Meri Gaon Mera Dharohar initiative or program. So this is a pan-India initiative of Ministry of Culture under the National Mission on Cultural uh, Mapping, and it was launched in 2023. So the aim is to compile comprehensive information detailing life, history, uh, and ethos of Indian villages. So the data which will be collected will be under 7 broad categories: arts and crafts villages, ecologically oriented villages, scholastic village, etc. The objective is to culturally map India's 6.5 lakh villages through spanning through 29 states and 7 union territories. Okay, the core idea behind this project is to encourage appreciation for India's cultures and traditions. So the next topic is transiting exoplanet survey satellite. This topic is important for your science and tech section. So using data from the NASA's transiting exoplanet survey satellite, astronomers have recently discovered and characterized a habitable zone planet named TOY 715b. So what is TESS? TESS is NASA's mission, which is searching for planets orbiting the brightest stars in Earth's sky. So the satellite is a follow-up to NASA's highly successful Kepler Space Telescope, which found thousands of exoplanets during a decade of its work since its launched in 2009. It was launched in 2018 and TESS circles Earth in a unique high Earth orbit of 12 to 15 days, and it has been placed in such a way that it is largely free from obstructions by our bright planet and the moon. So it contains 4 sensitive cameras which are systematically scan over 2 lakh of which has systematically scanned over 2 lakh of the nearest and brightest stars, imaging 75% of the sky. So the prime mission of this test ended in 2020, but it is now on an extended mission. Okay, so how it finds exoplanets? It uses the transit method to detect planets through. So basically, it looks for periodic dips in stars' brightness, and as planets cross in front of them along our sight line, it this test observes them and records them and maps them. Okay, so the next topic is coronal mass ejections. This topic is important for your science and tech section. So an Indian Institute of Astrophysics teams along with international collaborators recently developed a new model for internal thermal evolution of coronal mass ejections. So coronal mass ejections are large expulsions of plasma and magnetic field from sun's atmosphere, which we also call corona, and they propagate outwardly into interplanetary space. So during a coronal mass ejection, the sun releases a colossal amount of material, including electrons, protons, heavier ions, as well as magnetic fields. So they uh, are similar to solar flares, and they produce strong localized magnetic fields. Also, they usually take place around sunspot groups, and the CMEs travel outward from the sun at high speeds, and they reach our planet in as little as 15 to 18 hours. They expand in size. And how do they impact our Earth? So they cause geomagnetic storms which can disrupt satellite communication, navigation systems, and even power grids. They also cause spectacular displays of the northern and southern lights, which we also call auroras. So they also pose radiation hazards for our astronauts who are working in space or passengers on high altitude flights if they are exposed to elevated levels of radiation during this event. Okay, so the next topic is Abhyas. This topic is important for your security section. So DRDO has recently successfully conducted 4 flight trials of the high speed expandable aerial threat Abhyas recently. So Abhyas is a high speed expandable aerial threat which is designed by the DRDO's
aeronautical development establishment. It offers a realistic threat scenario for the practice of weapon systems. So it is designed for autonomous flying also with the help of an autopilot indigenously made by the ADE. It has a radar, and it has visual and infrared augmentation system which is required for weapon practice. Okay, so the target drone has a laptop based ground control system with which the aircraft can be integrated, and pre-flight checks, data recording, post-flight analysis can be carried out. So what is DRDO? Of course, it is the R&D wing of the uh, Ministry of Defense. It is India's largest research organization, and it was formed in 1958. Its headquarters is located in New Delhi. So the next topic is Nagoya Protocol. This topic is important for your environment section. So Cameroon has recently adopted the Nagoya Protocol on access and benefit sharing. So this protocol is a legally binding global agreement which implements the access and benefit sharing obligations of the Convention on Biological Diversity. So this was adopted in Nagoya in Japan. That is in Japan in 2010, and the aim of Nagoya Protocol is to ensure fair and equitable sharing of benefits which arise out of utilization of genetic resources. So it establishes a framework which helps our researchers to access genetic resources for biotechnological research, development, and other activities. It also covers traditional knowledge associated with genetic resources. Okay, so what is Convention on Biological Diversity? It was signed in 1992 in Rio de Janeiro during the UN Conference on Environment and Development. So it has three overarching objectives. First, of course, is the conservation of biological diversity. Second is the sustainable use of it. Third is the fair and equitable sharing of it, the benefits that arise out of it. Okay. So Conference of Parties, the highest political decision making body of this convention. Its secretariat is based in Montreal, that is in Canada, and to support the implementation of CBD, two internationally binding agreements were also adopted. First, of course, is the Cartagena Protocol. Second one is Nagoya Protocol. Under Cartagena Protocol, which was adopted in the year 2000, it regulates the transboundary movement of living modified organisms. And under Nagoya Protocol, the fair and equitable sharing of the benefits which arise out of the use of genetic resources are regulated. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.